we're continuing our lesson on log. So solve these questions, but without using a calculator. Log x to the base 2 equals 3. Why is this even a question? Chalo kar lete. Yes. Log x to the base 2 is equals to. Acha nahi, it is a valid question. So how do we do this? We did discuss questions like these yesterday. So who can who recalls that from yesterday's lesson? How do we solve this equation? Solving means you have to find the value of x. कैसे आएगी value of x? X will be equal to 2 cube. This has to be sent to the other side ताकि इधर x subject बन जाए. And when the log base 2 goes to the other side, so it becomes 2 in the base and 3 goes in the power. So x equals 8. ठीक है. अच्छा जी. उसके बाद part B is log x base x 9 equals to 2. How do we find the value of x here? अदन आप बताओ क्या होगा? मैं अदन आवाज नहीं आई, दोबारा बताओ. You have to मैं send. कह रही हूँ natural log दे सकते हैं? क्या हो सकता है? Natural log. नहीं, नेचुरल लॉग को नहीं खत्म करता. There is already a log in this question. आप दोबारा log on both sides लोगी तो 2 log हो जाएंगे question. That is not when you take natural log. Natural log हम या log तब लेते हैं when there is a variable in the power. जैसे कि अगर question होता 2 power x is equals to 5. तो फिर इसको नीचे लाने के लिए you could take ln on नहीं, both 3 sides. का 4 ले लेंगे. आपने log x को दूसरी साइड पे भेजना है. And when log x goes to the other side, it becomes x power 2. So अब x की क्या वैल्यू होगी? किसका स्क्वायर 9 होता है? 3. 3 का. You can't write -3, although -3 का भी square is 9, but the base of log can never be negative. We discussed it yesterday. So the answer is only x is equals to 3. Okay. Next is log 2x plus 1 base 2 equals 3. जी हैदर कैसे करेंगे? मैम 2 power 3 is equals to 8. 8 is equals to 2x plus 1 और 7 over 2 आंसर हो जाएगा फाइनल. ठीक है. Log 2 goes to the other side. When log 2 goes to the other side, it becomes 2 raised to the power 3 equals 2x plus 1. 2x equals 2 cube is 8, minus 1 is 7. So x is equals to 7 by 2. Part D. Part D is log 6u minus 9 to the base u equals to 2. Okay. Fazil, how do we do this? बल्कि Fazil से मैं पूछ चुकी हूँ. Marine, how do we do this? Log u needs to go to the other side. How will log u go to the other side?
U will become the base and 2 will become the power. U square. So when log U goes to the other side becomes U and 2 goes in the power and we have 6U minus 9. This is now a quadratic equation, U square minus 6U plus 9. So we're going to solve it using factorization, also known as middle term breaking, minus 3U minus 3U plus 9. U is common, U minus 3 is common, U minus 3. So we have 0 is equals to bracket U minus 3, bracket U minus 3, and we have U equals 3 and U equals 3. The answer is just U equals 3. Okay, that's part D. Part E. Now part E is another question. Again, you can't use a calculator. Question is, without using a calculator, evaluate the following. Part A, log 1 to the base 2 plus 2 log 5, log 25 to the base 5. ये evaluate करना है without using a calculator. How do we do this? कल जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वो यूज हो रही है. कल एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि log 1 और ln1 किसके इक्वल होता है, और log a1 ये सब किसके इक्वल होते हैं? 0 के. 0 के. ठीक है, तो फर्स्ट टर्म तो 0 है. दिस इज 0 प्लस, अब इधर हम क्या करेंगे, हम पहले 25 को इसकी पावर में लिख लेंगे. वी कैन राइट 25 एज 5 स्क्वायर, सो 2 log 5 स्क्वायर टू द बेस 5. ठीक है, अब हम log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे. हमने पढ़ा हुआ है log p to the base a, और अगर इधर कोई भी पावर हो n तो क्या प्रॉपर्टी है, that power comes down. So this 2 comes over here. There's already a 2 over here, so that becomes a 4 log 5. और हमने कल एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि log a और ln e equals what? 1. Yes, ये 1 के इक्वल होता है. So this would be 1. So the answer is just 4. ठीक है, तो मैं कल भी कह रही थी, आज दोबारा कह रही हूँ कि प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी आनी चाहिए. Okay. Part B. Whole power 2, a fraction, 3 log x to the base x and square plus 2, and 4 minus 2 log 1 to the base 5. जी, कौन कौन सी प्रॉपर्टी इधर अप्लाई हो रही है? अदर एक प्रॉपर्टी बताओ जो यहाँ अप्लाई हो रही है, दैट यू कैन ऑब्जर्व. मैम ये 2 नीचे आके 3 के साथ मल्टीप्लाई हो. बिल्कुल सही है. ठीक है, एक प्रॉपर्टी अदर ने बता दी, 6 log x plus 2, 4 minus 2 log 5 1. Supposed to say log 1 to the base 5, but बहुत लंबा हो जाता है. ओके, एंड होल पावर 2. मेरीन कोई प्रॉपर्टी बताओ.
Can you observe any property in the fraction that we discussed yesterday? 2 log 1 to the power 5 जो है सिर्फ 2 हो जाएगा. Yes, log 1 base 5 becomes 1, right? So this just becomes 2. बिल्कुल सही है. So the denominator is just 4 minus 2, which is just 2. So that in the end, the denominator is 2. log base 5 1 0 नहीं हो जाएगा? Sorry. Yes, बिल्कुल 0 होगा. My bad. 0 होगा. ये 1 होना चाहिए था. This would be 1. Log x would be 1. जब भी 1 इनपुट होता है log का तो वो 0 हो जाता है. This would be 0. So this would be 0. और ये आ गया 4. Whole square here and whole square here. Numerator में like already pointed कि 6 के साथ 1 आ जाएगा. 6 times 1 is 6 plus 2 is 8. So 6 times 1 plus 2. So that is 8. So we have 2 square which is 4. सही है. ठीक है Myrene? Log with any base and 1 as input is always 0. So is ln1. It's always 0. 1 कब होता है? जब हो log 3 3 या log 5 5 या ln e. ये 1 होता है. Okay. Part C is log base 2 6 minus log base 7 bracket 1 over 49 and bracket close. जी इधर क्या हो? How can we go about this? मैम 1 over 49 को 7 power minus 1 लिख सकते हैं. 7 power minus 2 लिख सकते हैं. Yes 49 मैम. हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है. Good observation. So log base 2, this becomes 6 minus log base 7 and 1 over 49 is actually 7 power minus 2. Okay, because this would be 1 over 7 square, and when 7 square goes up, it becomes 7 power minus 2. That is correct. Next step should be minus 2 can come down. So we have 6 plus 2 log 7 7. Marine log 7 7 क्या बन जाएगा? 1. Yes, this is 1. And we have log 2 6 plus 2, which is log 8 base 2. However, we're not done yet. We need a final numerical answer. अब क्या करें? Also, you're not using a calculator, so आपने बिल्कुल end तक अपनी working दिखानी है. इधर directly 3 नहीं लिख सकते. इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि अगर आप कैलकुलेटर में log 2 8 लिखोगे तो वो आपको 3 दे देगा. बट क्वेश्चन ने कहा है कैलकुलेटर नहीं यूज करना, तो आपने दिखाना है कि मैंने कैलकुलेटर. हाँ. So 8 की जगह I hope that is what you said. I don't know मेरे स्पीकर में मसला है या क्या है कि मुझे आज इतना अच्छा समझ नहीं आ रहा आपको क्या कह रहे हो. Okay, so this would be 2 cube. The 8 can be replaced by 2 cube and then 3 log 2 to the base 2, and we know that this is 1. So our final answer would be 3. So you have to go down till the very last step. इसको डायरेक्टली ऑल्दो आपको पता होगा, मे बी पता हो कि log 2 8 का मतलब है कि 2 की कौन सी पावर आंसर 8 देती है. सो दैट इज 3, बट स्टिल यू कांट यूज दैट बिकॉज उससे लगेगा कि कैलकुलेटर यूज किया. आंसर इज 3. What else? Okay. Part B. No, sorry, another question. Solve
1.6 power x equals 21. Yes, how do we do this? Then आप बता सकते हो, unmute करो. x नीचे आ जाएगा और दोनों साइड पे नेचुरल लॉग लेनी है. कर सकते हैं, that's one way of doing it. We can take natural log on both sides. ln 1.6 power x equals ln 21. Because of that, x can come down from log property. And we have ln 21 at the right, and x equals ln 21 over ln 1.6, and x equals ln 21 over ln 1.6. 6.47765 and round it off to 3 significant figure. Okay. अच्छा, फजील और किस तरह कर सकते हैं क्वेश्चन? log base 1.6 of 21 equals x हो जाएगा. ठीक है, x equals log base 1.6 of 21. ठीक है, and this will directly give you the same answer. Let's check. Log base 1.6 मैम इस मेथड से वैसे वर्किंग के मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? 100% मिलेंगे. अब इसमें ये इस क्वेश्चन में यू कैन यूज अ कैलकुलेटर. सो दोनों मेथड में कैलकुलेटर तो यूज करना है नहीं केस. दोनों बिल्कुल ठीक है. Moving on to part B. E power 4x equals 125. मुझे जरा 1 मिनट चाहिए. I'm coming back. Okay. Okay. So E power 4x equals 125. Okay. जी मेरीन. We take natural log on both sides. Yes, we can. That is one way of doing it. I'm going to take ln e power 4x is equals to ln 125. Next step, Mary. We'll take 4x down. Yes, 4x. ln e equals 125. Sorry, ln 125. Then what? We'll take ln e to the other side and divide it. You can, definitely you can, but आपको ये भी पता होना चाहिए कि ln e किसके equal होता है. This is one of the properties of log. Just helps. Okay, thank you. If you know this, what is ln e? 1 होता है. ठीक है, remember ln e का मतलब है log to the base e of e. So that is 1. ठीक है, so ln e is 1. So this is just 1. So x will be equals to ln 125 over 4. ln 125 divided by 4 is
1.207078 biggest accuracy दिखानी होती है before you round it off. Okay. Directly ये कैसे हो सकता है अदन? Without taking natural log on both sides. मैम ये 4x को बेस में ले आएंगे और 125 की इक्वल कर दें। तो e किधर गया फिर अगर 4x बेस में आ गया? e मैम ने ई बेस में आएगा। साइड पे जाना है, e ने दूसरी साइड पे जाना है ना, ताकि 4x नीचे आए। कल हमने डिस्कस किया था e किस तरह दूसरी साइड पे जाता है। जब e दूसरी साइड पे जाता है ना इक्वेशन के, तो वो बन जाता है ln। ठीक है, so you can send e to the other side and it just becomes ln 125. 4x equals ln 125। कल का लेसन दोबारा से देख लेना अगर आपको कोई बातें भूली हुई हैं। ln 125 over 4 and that is what we did here. X equals 1.21 after rounding. So remember, when e goes to the other side, it becomes ln. When ln goes to the other side, it becomes e. Okay. Part C, अगर मैं जल्दी स्क्रॉल डाउन कर देती हूँ तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल मी कि हमने नहीं कॉपी किया था, प्लीज शो दैट अगेन, वरना मैं एज्यूम कर रही होती हूँ कि सब मेरी स्पीड के साथ ही चल रहे। ओके, तो हैदर बताओ, हाउ वी डू दिस? 4 power 2x minus 3 equals 20. Log natural on both sides. ठीक है, one way of doing that is take natural log on both sides. Next, the power will come down. So 2x minus 3 हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्योंकि एक पूरा एक्सप्रेशन है। साथ ln 4 is equals to ln 20. Next step है इधर, इधर सॉल्व करने लग गया और बता नहीं रहा कि 2x minus 3 इधर ही रहेगा, ln 20 डिवाइडेड बाय ln 4 कर देते हैं, फिर आंसर में +3 कर देंगे और होल डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। ठीक है, सो I'm going to write ln x equals ln 20 divided by ln 4 plus 3 whole divided by 2. I'm doing it all in one step. ln 20 upon ln 4, इसका आंसर क्या जो भी आया, आंसर +3, आंसर divided by 2. So I'm getting x equals 2.580482. And then round it off to 3 significant figure 2.58. Okay. हैदर और किस तरह से कर सकते हैं क्वेश्चन टू रिड्यूस द नंबर ऑफ स्टेप्स? फजील कैसे कर सकते हैं इसको? It's log base 4 of 20 equals 2x minus 3. ठीक है, 2x minus 3 is equals to log 4 of 20. That works. अब log 420 हम कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं, फिर उसमें +3 कर देंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। So log 4 of 20 plus 3 divided by 2 equals x. So log 420 plus 3 divided by 2 gives the same answer, 2.58 after rounding. Next question. Part D, which is 4.1 power x is equals to pi. So either you take ln on both sides, ln 4.1 power x equals pi, x ln 4.1 equals pi, x equals pi over ln 4.1, which is 0.812.
Or quicker way of doing it is take 4.1 to the other side. And then how does 4.1 goes to the other side? Ma'am, log base 4.1 bracket pi. Yes. Good. And that will directly give you the same answer. Next set of questions. If now you can't use the calculator, वैसे इसमें use भी नहीं हो सकता calculator. So algebraic question है log 3 equals p. Quick revision, log 3 में base क्या है? 10. Yes. Log 10 is equals to r. When the base is not mentioned, by default, the base is 10. Okay, express the following in terms of PQR. Okay, the first part is log 45. How do we write log 45 in terms of P or Q or R or all of them combined together? Heather, are you there? Yes, ma'am. कैसे लिखें log 45 को PQR फॉर्म में? एक हिंट मैम दे 10 पावर p इज इक्वल टू 3 एक तो हो जाएगा ऑप्शन. 10 पावर q इज इक्वल टू 5 एक ऑप्शन हो जाएगा. फिर उससे साइमल्टेनियस पे कर लें हम. नहीं मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या बोल रहे हैं. आई थिंक यू ओवरली कॉम्प्लिकेटिंग इट. कहाँ से आई साइमल्टेनियस इक्वेशन? 10 पावर p. नहीं ऐसे नहीं करना. नहीं बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना. हिंट देती हूँ. कल हमने लॉग की प्रॉपर्टीज पढ़ते वक्त डिस्कस किया था कि लॉग a टाइम्स b किसके इक्वल होता है? याद है? log a प्लस log b. हाँ, ये कहीं यूज हो रहा है. log 45 को मैं किसके प्रोडक्ट में लिख सकती हूँ? फोर्टी फाइव की प्राइम फैक्टराइजेशन करें या It's 9 5 और 5. times 3 square. हाँ 5 टाइम्स 3 स्क्वायर लिख सकते हैं या 5 टाइम्स 3 कर ले. ठीक है. 5 टाइम्स 9 इसलिए नहीं किया क्योंकि ऊपर हमारे पास log 3 है. सो 9 करते तो फिर थोड़ा और 9 को 3 स्क्वायर लिखना पड़ता. ठीक है. सो 45 कैन बी रिटन एज log टाइम्स 45 can be written as 5 times 3 times 3. Now what should be the next step? Use this property and ये इक्वल हो जाएगा log 5 plus log 3 plus log 3. तो आंसर क्या होगा इन टर्म्स ऑफ PQR? log 5 है Q plus log 3 है P and plus log 3 है P. So the answer would be Q plus 2P. Any questions here? No, ठीक है. ma'am. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट बी है log 750 को लिखना है in terms of P, Q and R. So how do I break 750 into maybe 3, 5 and 10? सेवन फिफ्टी एक तो 10 से हो गया डिवाइड, 75 आ गया
और 5 से भी हो गया। 75 डिवाइड बाय 5 क्या होता है? 15. 15। और दोबारा 5 से हो गया 3, और दोबारा 3 से हो गया 1। ओके, तो log 10 times 5 times 5 times 3, so that would be Marine. जा सकती हूँ नेक्स्ट स्टेप? log 10 plus log 5 plus log 5 plus log 3. Good. So that would be R plus Q plus Q plus P. So R plus 2Q plus P. That's correct. This was part B. Okay, part C now. Part C is log 4.05. How do we do this? जी 4.05 को कैसे लिखें in terms of all of these? पहले तो इसको डेसिमल में चेंज करो। 4.05 को डेसिमल में कैसे लिखेंगे? सॉरी, फ्रैक्शन में। डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 1/20. 1/20 अगर हमने कर लिया तो फिर हम उसको Plus 4. 1/20 प्लस, हाँ दैट वर्क्स। थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाएगा वैसे, क्योंकि हमारे पास इधर नहीं है ना log 4 वगैरह, और फिर हमें ऐसा इसको भी नहीं सॉल्व करना आता। log 120 प्लस 4 को हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि ऐसी तो कोई हमने प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी जिसमें log के अंदर एक सम हो a प्लस b, वो तो हमने नहीं पढ़ा। सो नो, दैट इज नॉट हाउ यू डू इट। यू कैन रिप्लेस 4.05 with 405/100। तो 100 की जगह आप 10 और 10 लिख दोगे। log 10 into 10। और 405 की जगह हम क्या लिख लेंगे? 81। फिर हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 27। फिर से 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 9, 3, 3, 3, 1। So we have 1, 2, 3, 4. I'm going to write 3/4 into 5। ये आ गया। अब एक और प्रॉपर्टी भी यूज हो रही है विच इज log a डिवाइडेड बाय b। ये किसके इक्वल होता था? log a minus log b. ठीक है, log a माइनस log b। सो जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना उनको हम ऐड कर देंगे, और जो डिवाइड हो रहे हैं उनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अब इससे एक और प्रॉपर्टी हम डिड्यूस करें। अगर हमारे पास न्यूमरेटर में a b हो और डिनोमिनेटर में लेट्स से c d हो, तो जो न्यूमरेटर में है वो ऐड होंगे log a प्लस log b, और जो डिनोमिनेटर में है वो सब्ट्रैक्ट होंगे माइनस log c माइनस log d। ऐसे होता है, ठीक है। so that's going to be log 3/4 plus log 5 minus log 10 minus log 10. So this becomes 4 log 3 plus log 5 minus log 10 minus log 10. So log 3 is p, log 5 is q, and log 10 is r. So 4p plus q
minus r, so minus 2r. Okay. I'm going to end the link here, and then when we come back, we'll talk about inequality in log. Okay, and then we'll talk about graphs in log graphs, and then we'll be done with the chapter and we'll start the worksheet. So let's see you in a bit. Let's discuss inequality in log. Okay, so here's a inequality question. Log base 5 of 1 over 5 power x. Yes, it's right, 0.7. Never mind. Power x is greater than 3. You have to solve this inequality. So what do? We write log 5, and 1 over 5 is 5 power minus 1. Or यहाँ पे minus 1 into x. So it becomes minus x. Is greater than 3. So the power comes down, minus x log 5 is greater than 3. So log 5 is actually 1. So we have minus x greater than 3. So we have, what is the final answer in terms of x? क्या होगा? X is what? Less than minus 3. Yes, less than minus 3. Because when you multiply minus 1 on both sides in inequality, remember to flip the sign of inequality. Okay, another one. This was A. Let's do B now. B is 0.2 power x is greater than 8. अब क्या करेंगे? जी बताएं. How do we solve this inequality? X is greater than log base 0.2 of 8. ठीक है. That is an inappropriate way of doing this question. अभी डिस्कस करते हैं. आपने कहा है कि 0.2 को दूसरी साइड पे ले जाते हैं. ठीक है, तो वो जी. बन गया x is greater than log. स्क्रीन का मसला शुरू हो गया. log 0.2 in the base and 8 है. ये कह रहे हो ना आप? So that gives x जी. is greater than log base 0.28. That is minus 1.29. ठीक है, इस मेथड से ये आंसर आया. ये गलत आंसर है. दूसरे मेथड से करते हैं, where we take ln on both sides. वो करके देखते हैं. Okay, now we're taking ln on both sides. Heather, I hope you're paying attention. This is an important topic. ln 0. Yes, ma'am. ln x power 8. So ln 8, ln 0.8 power x greater than ln 8. अच्छा, तो ये x नीचे आ गया. ln 0.2. I really need to start writing with my stylus. में इतनी गर्मी है कि I should not be writing directly on the screen. अच्छा जी. So अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, लेकिन डिवाइड करने से पहले यू मस्ट ऑलवेज 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 चेक कि जिस चीज को हम डिवाइड कर रहे हैं दूसरी साइड पे, क्या वो नेगेटिव वैल्यू तो नहीं है. सो
ln 0.2 would be a negative value. 1 से छोटी log की अगर value हो ना between 1 and 0 तो वो हमेशा negative answer ही देता है. So this would be a negative value. You can even check it in your calculator. ln 0.2 जो है it's a negative value. अब आप दोनों sides को negative value से divide कर रहे हो, so that means you will be changing the sign of the inequality. This is negative, so we get x is less than ln 8 divided by ln 0.2. बिल्कुल भी नहीं लिखा जा रहा. x is less than ln 8 divided by ln 0.2. That is going to be some negative value, negative 1.2. So whenever you have log inequality question, stick to the conventional method of solving log. Take log on both sides or natural log on both sides. Do not use the direct method. Do not use the shorter method. उससे आपको पता नहीं चलता कि आप negative value से divide कर रहे हो या positive value से. ठीक है. और जरूरी नहीं है अगर आंसर नेगेटिव आए तो आपने नेगेटिव वैल्यू से डिवाइड किया. न्यूमरेटर भी तो नेगेटिव हो सकता है. लाइक अगर इधर ln 8 नेगेटिव होता तो फिर तो आप फ्लिप नहीं करते साइन को. So always use the bigger method, the conventional method whenever you're solving log inequality, वरना आपका साइन उल्टा आएगा. ठीक है. Okay, let's do another one. If the screen lets me write. अच्छा जी, next one is 0.5 power x is less than 1 by 5. 0.5 power x is less than 1 by 5. खुद करते हो इसको. तब तक मैं स्टाइलिस मंगाती हूँ नीचे से. Yes, do we have an answer? It's greater than 2.3219. हाँ ठीक है. x is greater than 2.32 ही आंसर मेरे पास लिखा हुआ है. बाकियों का ये आया. Yes, ma'am. जी मैम. मेरीन आया या मैं करा दूं जल्दी से. हो गया मैम. Okay, excellent. Okay, do the next one. 5 power x is less than 0.2. This is the last one. 5 power x is less than 0.2. Ma'am, x is less than -1. X is less than -1 सही आंसर. इसमें नहीं हमने इनइक्वालिटी के साइन को चेंज किया. नो मैम. हाँ, क्योंकि करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हमने नेगेटिव वैल्यू से डिवाइड नहीं किया. ये नया वाला पुराना वाला देखते हैं. नया वाला. थैंक यू सो मच. ओके ठीक है. थैंक यू. इसको ले जा, मैं इसको वापस. थैंक यू जी.
Everybody got the same answer? Marine got the same answer, x is less than -1. इस क्वेश्चन में Yes, हमें ma'am. इनइक्वालिटी को फ्लिप करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि न्यूमरेटर नेगेटिव था, डिनोमिनेटर नहीं नेगेटिव था. यू डिड नॉट नीड टू डिवाइड बोथ साइड विद अ नेगेटिव वैल्यू. ठीक है, इसलिए ये आंसर आ गया. तो आगे चलें फिर. द लास्ट थिंग वी डिस्कसिंग before starting the worksheet are graphs of log functions. Graph of log. मैम एक्सपोनेंशियल का ऑपोजिट होता है ग्राफ इसका. हाँ बिल्कुल, अभी इसकी बात करते हैं. अच्छा, अ, जो फंक्शन होता है ना, लेट्स से लॉग, चलो इसको लॉग को अभी छोड़ते हैं, ln और e की बात करते हैं. जो ln x होता है ना, ये लेट्स से ये fx है. तो इसका जो इनवर्स फंक्शन होता है f इनवर्स ऑफ x, वो होता है ln जब दूसरी साइड पे जाता था तो क्या बनता था, e. सो इसका जो इनवर्स फंक्शन है ना, दैट इज ex. और हमने as में पढ़ा हुआ है कि fx और f इनवर्स x के ग्राफ में क्या रिलेशनशिप होती है. हु रिमेंबर्स दैट फ्रॉम as? fx और मैम f इनवर्स y x, इक्वल टू x पे रिफ्लेक्ट हो जाता है. बिल्कुल सही है. ये जो fx और f इनवर्स x का ग्राफ होता है वो रिफ्लेक्शन होती है ऑफ ईच अदर ऑन द लाइन y इज इक्वल्स टू x. अब e पावर x जो है दैट इज एक्सपोनेंशियल ग्राफ, वो इस तरह से बनेगा, यूं करके जाएगा. ये वैल्यू क्या होगी इधर, 1. e power 0, हाँ 1. वेरी गुड. सो दिस इज द ग्राफ फॉर y इक्वल्स ex और जस्ट ex. तो जो दूसरा ग्राफ होगा ln x का, दैट विल बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ दिस ऑन द लाइन y इज इक्वल्स टू x. सो दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस. इसका एसिम्प्टोट x एक्सिस है ब्लू वाले ग्राफ का. तो जो दूसरा ग्राफ है उसका एसिम्प्टोट हो जाएगा y एक्सिस. इट विल गो लाइक दिस, यूं करके बनेगा. एंड हियर दिस वुड बी 1 एंड दिस इज y इक्वल्स ln x. सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉग फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो होता है रिफ्लेक्शन ऑन द लाइन y इज इक्वल्स टू x. तो अब अगर एक फंक्शन है, लेट्स से y इक्वल्स 2 पावर x और एक फंक्शन है y इक्वल्स log base 2 of x. So again these two graphs would be reflections of each other on the line y is equals to x. एक्सपोनेंशियल का ग्राफ पहले बनाते हैं. ओके, सो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ इस तरह से बनेगा. अगेन दिस इज 1 और ये एसिम्प्टोट है x एक्सिस इसकी, और ये है ग्राफ 2 पावर x का. y इज इक्वल्स टू x की लाइन बना देनी चाहिए फॉर क्लैरिटी, बल्कि बनानी ही चाहिए. डॉटेड भी बना सकते हो, डॉटेड बना दो तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि वो ग्राफ का पार्ट नहीं है. So partial strokes. और फिर लॉग का ग्राफ इस तरह होगा, रिफ्लेक्शन ऑन द लाइन y is equals to x and this would be 1 here and this is log base 2 of x. ठीक है, ये आ गया लॉग का ग्राफ और उसके इनवर्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ. एनी क्वेश्चंस here? I think let's end the lesson here. I'll send you the worksheet in the group, but we'll start the questions tomorrow together. Okay? Okay. See you tomorrow. Have a good day. Allah Allah Hafiz. Hafiz, ma'am. लाफ मैम.
Hafiz.